evening and a warm welcome to all of you. At the outset, I Ashutosh, along with my co-host Harshita, on behalf of SPE IIT ISM Student Chapter and PP IIT ISM Student Chapter, feeling honored to welcome our esteemed guests who were once our final year seniors and now have successfully embarked on their professional journey. We are privileged to have them join us for this placement talk, where they will share their valuable experiences and insights after being placed in prestigious companies. Here we have our seniors from non-core. We welcome Tisha Biswas ma'am, placed in Field Assist, Rishabh Bhura sir, placed in Jubilant Enpro, Akash Singh sir, placed in Cogoport, Harsh Kumar sir, Yash Agrawal sir, and Rishabh Gupta sir, placed in Beehive, Sunny Kumar sir and Akash Bansal sir, placed in EXL, Jay Gupta sir, placed in Tata Consultancy Services, Siren Kaul ma'am, placed in Microsoft, Yash Mittal sir, placed in Gamescraft Technologies. To this program where we all are already excited to know all the preparation strategies and challenges we have come across in graduation life. So without wasting much time, we start with our first question. At what stage, seniors, did you prioritize your stream? When did you decide that you want to go for a non-core job profile? What are the opportunities we have in off-campus placement versus on-campus placement for the non-core thing? Okay. So first of all, I guess on-campus placements are much more than off-campus, because off-campus, you are competing against many skilled people rather than on-campus. So better to try for on-campus. That is all. कोई और है क्या जो कुछ बोलना चाहता है भाई? बाकी लोग आए हुए हैं. Yes भाई. Yes. So personally, for me, I started coding in my second year only, and basically there are a lot of opportunities in the field of SD. So if you try to go for a SD profiler, there are a lot of scope. You just need to focus on certain things which are essential, and for both on campus and off campus, there are a lot of opportunities. Even if you are from non-circuital branch, it won't affect that much if you have good preparation. Okay, so Yash, yeah, Durkesh, continue. बोलो. Hello. You're audible. Yeah. Okay, so agreeing with Yash, I think there are a lot of opportunities both in off-campus and on-campus if you know how to find it. But as for me, like I started doing, if you guys know my profile, it's business analyst, and I was looking for product or business opportunities only. So in our institution, there are not much opportunities on campus for this. भौतिक नहीं है यहाँ पे. मुझे बहुत सारे complaints करने हैं, but ठीक है. So as you know guys कि ज़्यादा much culture नहीं है product का या business का, but as you know कि अभी product club खुली है, बाकी fintech club है and all of that, बाकी तुम्हारे seniors है, तो ये सब profile में अगर कोई interested है, तो उसके लिए तुम लोग जाके specific एक senior को approach करो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो फील्ड्स है ये मच प्रैक्टिस्ड या मच डिस्कस्ड फील्ड्स नहीं है अपने कॉलेज में, तो तुमको ना पता नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में पढ़ोगे या किस डायरेक्शन में चीज़ें करोगे तभी सही रास्ता मिलेगा. तो फाइंडिंग अ गुड सीनियर, फाइंडिंग अ प्रॉपर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज फील्ड्स. बाकी तो हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ का आई वुड से कि ऑन कैंपस नहीं है मच अभी तक. आई होप सो कि आगे जाके ये सिनेरियो बेटर हो, क्योंकि आवर SCPT मेंबर्स आर ट्राइंग आई गेस, बट स्टिल टाइम लगेगा थोड़ा. सो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा अच्छे से ढूंढना, लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना बहुत अच्छे से. अगर किसी को प्रोडक्ट में या बिजनेस प्रोफाइल्स में ये सब चीज़ों में जाना है तो अच्छे से पहले तो खुद का CV बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि इन सब प्रोफाइल्स में ना तुमको एज अ फ्रेशर ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम एक टेक्निकल फील्ड से जा रहे हो. तो दे वुड थिंक ऑफ यू एज अ टेक्निकल पर्सन
कि तुम तो लाइक कन्वेंशनली पेट्रोलियम पढ़ रहे हो या फिर जो भी तुम्हारा ब्रांच है वो पढ़ रहे हो, तुमको फिर इन सब चीज़ों का नॉलेज कहाँ से होगा? तो तुम सीवी में ना ऐसे इफेक्टिव चीज़ें डालो जिसमें उसको प्रूव हो कि तुमको बस थियोरेटिकल नॉलेज है ऐसा नहीं, तुमको अप्लाई करना भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू फाइंड इंटर्न्स, try to do some effective projects जो जिसमें तुम्हारा एक्चुअली स्किल्स दिखे कि तुमने कितना अच्छा काम किया है, वो दिखे। तो इंटर्न्स ढूंढना बहुत इजी होता है क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस रोल्स में इंटर्न्स मिल ही जाती है, मतलब ठीक से कोई ढूंढोगे तो स्टार्टअप्स वगैरह में मिल जाता है। बाकी तो अपने कॉलेज के भी बहुत सारे सीनियर्स का, बहुत सारे एलुमनी का, बहुत लोगों का ऐसे स्टार्टअप्स है, तो उनमें भी तुम लोग ऐसे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कनेक्शंस अपना यूज करके, इसीलिए मैं बोल रही थी कि लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड देम, फाइंड द एचआर्स, जो लोग the people who are offering you opportunities, find them and उनको जाके रीच आउट करो। द थिंग इज दैट कि ये रीच आउट करने का प्रोसेस ना बहुत मतलब बहुत पेशेंस का है, बहुत मेहनत का है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर किसी को और डिटेल्स जानना है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन नॉन कोर और ये सब प्रोफाइल्स में, जिसको जानना है वो लोग अपने सीनियर्स को मतलब ट्राई करना कि अपने इमीडिएट सीनियर्स को पहले रीच आउट करो। अगर नहीं मिलता है कुछ भी तो हम लोग भी हैं एंड कर सकते हो अप्रोच। इन सब चीज़ों में किसी को डिटेल्स गाइडेंस चाहिए तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, कैसे कनेक्शंस बनाना है, क्या करना है। बाकी तो हाँ, अपना सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग रखो और सीवी में ऐसे चीज़ें डालो जिससे प्रूव हो कि यू आर क्वाइट स्किलफुल। बस तुम में नॉलेज है ऐसा नहीं है, बस पढ़ के नहीं आ गए हो चीज़ें। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फॉर माई कंपनी देर वॉज one aptitude round, and after that there was GD, and after that there were 2 rounds of interview. One was kind of technical. Both of the rounds were mix and match of like technical and HR parts. So this is it from my side for now. So I guess I wasn't able to find a lot of off-campus opportunities after hearing from yes sir and Krishnan. So don't be like me, guys, because if there are any opportunities, you have to find them, like Krishna ma'am and yes sir did. So, and other thing is that the major focus that I think in placement is that how are your habits during the placement season? You don't think that the little things matter very much like that. छोटी छोटी चीजें ना हम हल्के में ले जाते हैं लेकिन वो बहुत मैटर करती हैं। प्लेसमेंट के टाइम पे तुम जैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर जैसा है, तुम वैसे ही प्रेजेंट कर पाओगे, और अलग तुम जो बना के गए हो ना वो सब फेल हो जाएगा। तो तुम अभी जैसे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं हम लिख लिख के कि ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है, जैसे अभी जो होस्ट है आशुतोष नाम है ना भाई, कुछ तो सोच के आया होगा, कुछ तो प्रिपेयर किया होगा, तो जो भी प्रिपेयर करके जाएंगे ना प्लेसमेंट वो सब फेल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गॉन। So what you will show in the in interview will be you yourself. How are you? So I will say that try to change your habits during that 1 month period of time before placement, so that you can give your best. Thank you so Actually, much. it's a very true statement given by Durgesh, I think, because मतलब इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि you prepare something to say, but ये नहीं होता है कि तुम लाइन बाय लाइन वो चीजें बोल दो, जस्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, बट मतलब रादर डूइंग दैट तुम चीजें अडॉप्ट करो खुद में। और एक पॉइंट ये था कि एक क्वेश्चन ये था ना कि हम लोग कैसे ये समझे कि नॉन कोर में ये स्ट्रीम चूज करना है, क्या करना है। तो आई थिंक सबका यही होता है ना कि तुम जब इसीलिए जब फर्स्ट ईयर में तुम लोग आते हो तो सबको ये बोला जाता है, मतलब हम लोग को भी हमारे सीनियर्स ने बोला था कि सारे क्लब्स की इंडक्शंस में जाओ एंड डू एवरीथिंग एज मच एज यू कैन, सारी चीजें ट्राई करो। तो चीजें ट्राई करते करते ना तुमको अपनी इंटरेस्ट पता चलती है। जैसे कि फॉर मी आई जॉइंड ईसेल and now which is now fintech club, so वहाँ पे जाके I was in marketing team and layout and designing team. So there I get to know that product management is a thing, and where product designing and these things are very important. So I understood that these are my niche, so I can do this and I find my interest also in this. So like this, you have to find your interest and you have to pursue that as your career.
सो ये चीज तुम लोग खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि सब कोडिंग कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा, या सब पेट्रो पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, या सब कोई मार्केटिंग पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. तुम अपना समझो, एंड वो रास्ता कितना भी ऐसे रेयर हो या जो भी हो, जस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ. एंड मतलब उसमें ना तुम यूनिक बनने का ट्राई करो. अपना मार्केट वैल्यू जो है ना, कि मार्केट में तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करोगे, वो चीज थोड़ा ध्यान रखना, कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुमको लोग नोटिस करें. चाहे तुम कितना भी मतलब तुम्हारे कॉलेज में उस चीज का कल्चर हो ना हो, नोटिसेबल बनो. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो कोडिंग का आई थिंक कुछ ज्यादा, मतलब आई थिंक मेरे बैच से ज्यादा लोग आए भी नहीं है. बट आई से कि कोई अच्छे से गाइड करता तो बेटर रहता, क्योंकि बहुत लोग आई थिंक एसडी परस्यू करेंगे. Yes, for coding personally, I would say कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फ्रेंड बनाओ जो कोडिंग करें तुम्हारे साथ. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि 2-3 महीने कोडिंग कर लिए तो हो जाएगा. यू हैव टू डू इट फॉर अ ईयर और 2. तो फ्रेंड्स ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ बैठ के तुम लोग कोडिंग वगैरह करते हो और रेगुलरली डिस्कस करते हो. एंड काफ़ी वो रहता है कोडिंग फील्ड में, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है. बट स्टिल कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है. So इसलिए you can try this field. And for off campus opportunities also, काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स हैं ऑलरेडी एसडी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं इन लॉट ऑफ कंपनीज, राइट. सो उनको जाके तुम लोग रेफरल के लिए बोल सकते हो लिंक्डइन के थ्रू. एंड मोस्टली और मिल ही जाता है रेफरल. सो इट इज़ नॉट दैट टफ टू गेट रेफरल इवन if you have a decent profile. So just work on yourself. मतलब कोडिंग के लिए बेसिकली कोडिंग के लिए there are a lot of things like बहुत सारी चीजें हैं. like there are particular sheets for interview. You have to solve particular amount of question, so you will be good for interviews. And there are specific subjects which you need to be good at, like OOPS, DBMS, and OS. And other than this, you need to have 1 or 2 good projects. So even if you are trying for internship, or if you are in third year and going for placement, you just need to focus on these 3 things. Be good at DSA, uh, have 1 or 2 good project, have 1 good project at least, and be good at CS fundamentals. That's the 3 things which is required. So just focus on these things, and ultimately everything will be sorted out. There are a lot of seniors who will help you eventually, and I will particularly say there are a lot of seniors जिनको तुम पकड़ के आराम से पूछ लेना for every single step, because काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे पर्टिकुलरली एक बार में बताना मुश्किल है. So every step you need to know some of the things. So just DM any of the seniors which you think to help us. Mostly everyone will help from their side. So thank you so much, seniors, for providing such a detailed answer. Now moving on to the next question, like we already discussed about the importance of CGPA for core companies. So now let's talk about what is the importance of CGPA and how much CGPA you need to maintain for non-core companies. कोडिंग वाले आई गेस पहले बोल लो, तुम लोगों का थोड़ा इधर उधर रहता है, कुछ कंपनीज में होती है. ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले लोग. For coding profile especially, you need to have a if you have GPA greater than 7.5, that's good enough. Like there are very few companies which ask for GPA greater than 8. But there are a lot of companies which ask for 7.5. 7 is still good enough, but if you go below 7, then opportunities may get bit less. But still there are companies. But I will say just try to keep your GPA around 7.5, greater than equals to 7.5. That will help you. Okay, senior. So I have next question. That as we are from non-circuital branch, we are from petroleum. So how much opportunities do we have
to grab a non-core company? ओके सो अभी तुम लोगों को पता है ना कि सारी कंपनीज सब मतलब सबके लिए खुलती है, बहुत कम कंपनीज है जो लोग फॉर दोज 4 सर्कुटल ब्रांचेस के लिए खुलती है। ऐसे कंपनीज बहुत कम हो गए अभी, तो बहुत मतलब सारे कंपनीज ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए खुल जाती है, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, यू विल हैव ऑप्शंस। कुछ कंपनीज होंगे वो नहीं खुलेंगे, पर एंड सो मतलब वो सब कंपनीज के लिए फिर एम ही मत रखो, मतलब वो सब कंपनीज को अगर अप्रोच करना भी है तो मे बी ऑफ कैंपस उसके लिए रास्ता ढूंढ सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डू ओपन फॉर दे आर ओपन फॉर जैसे खुलवा भी सकते हैं ना अपन, खुलवा सकते हैं, हाँ लेकिन मतलब प्रोबेबली रिक्वेस्ट 40 to हाँ 50% ही खुलता है कंपनी नाम को। हाँ अरे मतलब ये है ना कि जीपीए रिडक्शन और ब्रांचेस इंक्लूड कराने का जो भी रिक्वेस्ट जाता है ना, वो मोस्टली मतलब बहुत कम ही वो सारे रिक्वेस्ट पूरे किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कंपनीज के साइड से बहुत स्ट्रिक्ट रहता है चीज़ें, बहुत कम कंपनीज होती है जो लोग ये सब चीज़ें सुनते हैं, मतलब रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं। तो मतलब पर स्टिल आई एम सेइंग ना कि यू गाइज विल हैव ऑप्शंस, इनफ मतलब ऑप्शंस इतना इन फैक्ट। कंपनी खुल जाएगा कि आप नॉन कोड जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे कुछ प्रोफाइल है उसमें तो क्या सारी ब्रांचेस के लिए खुल जाती है, जैसे टीचिंग का प्रोफाइल रहता है ना तो उसमें तो सभी खुल जाता है, तो ऐसे ही कुछ प्रोफाइल्स को तो तुम सभी अप्लाई मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ एक्चुअली मतलब इन सारे प्रोफाइल्स के लिए खुल ही जाता है, बाकी तो अगर नहीं भी खुलता है तो अगर कुछ कंपनी तुमको इसी कंपनी में जाना है कुछ स्पेसिफिक तुम्हारे लिए और वो कंपनी नहीं खुल रही है बिकॉज ऑफ योर सीजीपीए एंड ब्रांच, तो मे बी तुम लोग वो कंपनी ऑफ कैंपस भी अप्रोच कर सकते हो। अगर तुम ऑन कैंपस नहीं हुआ तो तुमको एचआर का कॉन्टैक्ट पता होगा, ये सब तो पता होता है, या फिर नहीं पता होता है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड देम ऑन लिंक्डइन एंड गो टू देम। हाँ रोशन कुछ क्वेश्चन है? यस मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जितने भी नॉन सर्किटल ब्रांच है एमएनसी के अलावा, मैं देख रहा था उन्हें जो सीएस वाली प्लेसमेंट मिलती है पैकेज बहुत कम लगता है। पैकेज कम लगती है, पर द थिंग इज दैट कि पैकेज कम भी लगती है ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो ना, अभी रिसेशन चल रही है ना, अगर तुम लोग पिछले साल तक के भी स्टार्ट्स देखोगे ना, मतलब पिछले साल तक का भी तुम लोग मतलब अगर प्लेसमेंट के स्टार्ट्स देखोगे या फिर पैकेजेस का वो सब देखोगे, जो लोग मेला डेमन फॉलो करते हो प्लीज देख लेना, इंस्टा पे अच्छे से स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा तुम लोग को, इंस्टा फिर एफबी सब पे ही, तो उसमें देख लेना। वहां पे देखना कि ये सब मतलब रिसेशन में थोड़ा हालत खराब हुई है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहती है। लाइक यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर पैकेज बाय द एंड ऑफ द पैकेज डे, उतना बड़ा क्योंकि इशू नहीं है, आगे जाके तुम स्विच कर सकते हो और उसी बैकग्राउंड सेटिस्फाई में तो हो ही कर रह जाएगा, सकते जो हो नॉन कोर ऑल्सो। जा रहा है तो कम पैकेज में सेटिस्फाई हो ही जाएगा क्योंकि उसका कोर तो हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोडिंग प्रोफाइल्स के वो देखे हो, पैकेजेस देखे हो, थोड़ा एक बार जाके प्लीज स्टैट्स चेक कर लो पहले। ठीक है, कोडिंग प्रोफाइल्स का जो जो कंपनीज ओपन टू ऑल था, उन सब कंपनीज का तुम लोग ऐसा नहीं होता है कि ओपन टू ऑल है तो सीएस वालों को ज्यादा पैकेज दिया जाता है और दूसरे ब्रांचेस को कम पैकेज दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी अगर सीएससी के लिए भी खुल रही है या फिर ओपन टू ऑल है तो सारे ब्रांचेस वालों का सेम पैकेज होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग पैकेज होती है कि तुम्हारी ब्रांच सीएससी है, इसकी ब्रांच पेट्रो है तो अलग दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनीज खुलेगी तो सेम पैकेज मिलेगा। थैंक यू मैम। Thank you so much, seniors. Now here comes the question that even if the company is opening for us, even if they are providing us opportunity to sit for their interview, so even after that, will they prefer a petroleum student over CSC, electrical or EC student? Yes, why not? Like, if you are good enough, if you have a good knowledge of the domain, and if you have the skill set, they will actually prefer. I'm not saying it for the sake. Actually, I've seen a lot of companies. They just don't. They took people from non-sector branch, even if they have circuital branch people options. So it's not like that. You just need to focus on the skill set. और मतलब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दी थिंग कि
you need to be good at, and क्योंकि particularly for coding profile इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना कि आराम से मौका मिल जाता है, एंड ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही नहीं कि दे डोंट प्रेफर नॉन सर्किटल बच्चे. सो फॉर कोडिंग प्रोफाइल आई विल से ये प्रॉब्लम नहीं होती मोस्टली वंस यू सीवी आर प्रोफाइल इन फॉर इंटरव्यू. हाँ, मतलब एक्चुअली में अगर कोई सही से प्रिपेयर किया है ना, मतलब कोई 6 महीने से या 3-4 महीने से भी अच्छे से प्रिपेयर किया है खुद को, तो वो इंटरव्यूज को दिखता है और तुम्हारे सीवी पे भी दिखता है. तो ऐसा है नहीं कि तुम किसी और ब्रांच, मतलब अर्थ साइंस वाले ब्रांचेस से हो तो तुमको कोडिंग प्रोफाइल में प्रेफर नहीं किया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती है, मतलब अभी तो नहीं है एटलीस्ट. Thank you so much, seniors. We have our next question, that is, can you suggest some resources for CS fundamentals? राहुल Okay, सर कुछ बोलिए, बता दीजिए मुझे. yes. For CS fundamental, actually there are a lot of resources and different judgment. I will tell what I followed. Right. So for there are 4 subjects basically: OOPS, OS, DBMS, and computer network. So for OOPS, I followed Saurabh Shukla YouTube channel playlist. You can follow that for OOPS. For operating system, you can follow this. There is a playlist by Love Bubber on YouTube. I followed that, and that was good enough for interview purpose. For DBMS, you can use the same Love Bubber playlist for DBMS, and for computer networks, you can use Gates Measures playlist. So these are the 4 resources which I used personally, and I would say after learning from these resources, please go through the interview bit question regarding the important interview question on these subject. That will be enough for these subject. Thank you, seniors, for this great answer. Now, I have another question from Ketak Saurabh. I feel that my progress has been very slow in learning C++, and I feel I'm gradually losing interest due to time it has been taking. And still, I'm not well versed with the language. How do I improve my condition? And what if I lose interest in non code? Okay. So about the slow progress thing, see, मतलब कोडिंग है ना, इसमें टाइम लगता है. इट्स नॉट कि if you do it for 2-3 months, you will be good at it. For coding profile particularly, you need to give around 6-7 months. So if you give 6-7 months, probably you will get better at it. इसमें एकदम linearly नहीं दिखता है कि तुम अच्छे हो रहे हो. थोड़ा टाइम बाद पता चलता है, okay, you actually improved from what you were previously. Right. So if you are right now slow at it, keep pushing. You will eventually get better. Starting में थोड़ी tough होता ही है, but धीरे धीरे ठीक हो जाता है. That's why I say have friends जिसका तुम coding कर सको. Things become easy when you discuss, और help भी मिल जाती है काफी when you discuss things, and there are a lot of tricks you need to follow for learning, जो कि आपस में डिस्कस करने से एक दूसरे को ट्रिक्स बताओगे, so you eventually improve, or once you begin to do things together, things become easy, right? So I would say this. And about interest, so see, अगर interest lose कर रहे हो नॉन कोर में तो कोड ट्राई कर सकते हो एक बार, if you are in second first year, but for coding you have to give a proper time, then only you will see improvement. So now adding on to the same question, like as intern season is very close, and we have non-core companies as well as core companies on their way. So the time is very short, and in this short period of time, what should we focus on? Like there is a person who asked this question, like he has been preparing for SD profile since a long time,
long time, and now Kane will also come for internship, and other non-core companies will also come for giving internship. So what should we focus on at this moment, core or non-core? Or is it possible to manage both at the same time? If I tell that I started studying core actually in late, but I was too late to start. So I think late, if you are studying petroleum engineering, then you should start early, because some basic concepts are not gonna be completed in the last time. एक होता है ना कि तुम पेट्रो पढ़ के अच्छा सीजी ला रहे हो, वो सब ठीक है, और एक होता है इंटर्नशिप के लिए खुद को प्रिपेयर करना। दो चीजें डिफरेंट है। और अगर तुमने एसडी के लिए इतना लेबर दिया है तो मतलब यू शुड बी फोकस्ड फॉर दैट ओनली, राइट? मतलब अगर तुम्हारा ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों साइड तुमने बहुत ज्यादा माल प्रिपेयर कर लिया और दोनों साइड तुम्हारी इंटर्न लग सकती है। तो अगर ऐसा केस है देन यू हैव टू चूज कि हाँ, तो मेरा तो दोनों में ही क्लियर हो जाएगा, सो नाउ आई हैव टू थिंक कि मैं केन में जाऊं कि मैं एसडी में ट्राई करूं। पर कोई एक तो होगा ना जिसमें तुमको मन होगा या तुम्हारा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होगा। तो ये चीज, जो लोग ना हर चीज में ट्राई करने जाते हैं उनका थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लाइक अभी तुम अगर केन के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रैब इट, और तुम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर रहे हो, फिर क्या हुआ कि तुम उतना अच्छा भी प्रिपेयर नहीं कर पाए जितना अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए था टू ग्रैब एन इंटर्नशिप इन केन, और फिर तुम्हारा एसडी का प्रैक्टिस भी छूट गया। फिर क्या हुआ कि जब एसडी की कंपनीज आई तो तुम ना उसमें कुछ तुमको इंटर्न मिली ना केन का इंटर्न मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में ही ट्राई करो, पर कुछ भी ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके दोनों चीजें लूज कर गए बिकॉज तुमने दोनों साइड दो नाव पे पैर रख दिया और कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो पाई। सो ये चीज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये सब चीजें काफी कंफ्यूजन होती है। इंटर्न सीजन के जस्ट पहले भी तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, इंटर्न सीजन की बाद भी होगी। इनफैक्ट अगर कोई भी इंटर्न नहीं मिला दोनों में से तब जाके और कंफ्यूजन होगी कि फाइनली किस में कंटिन्यू करना है। तो वो चीजें खुद का प्रिपरेशन खुद समझ के ये सब चीजें ट्राई करना कि किस पे फोकस करना चाहिए, ये तो तुम खुद बोल पाओगे ना। Thank you so much, seniors. We have our next question. Can you please throw some light on the weightage of CS fundamentals in the interns, and how much time did you guys devote during your intern season in preparing CS fundamentals? Yes. So for intern season, mainly DSA is important. Like most of the interview generally consists of a DSA round, and very few questions are asked from CS fundamentals. Basically, there are only two subjects in our time, which was OOPS and OS, which are asked for interns. And you don't need, I already have told about the playlist you need to follow, and it won't take too much time. Like you need to have around at max 10 days to prepare for CS fundamental. Right? You can prepare in 10 days, it will be enough. Mainly focus on DSA because that's the most important thing for internship, basically. ओके, एक चीज मेरे को ऐड करनी थी, सिंस यहाँ पे और कोई ये ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं, अब पता नहीं कोई मतलब एम करना चाह रहा है कि नहीं। जैसे कि एनालिस्ट प्रोफाइल्स जो होती है ना, मतलब एनालिस्ट वाले प्रोफाइल में दो इम्पोर्टेंट चीजें याद रखना। मतलब ये बहुत कम टाइम लगता है, एक हफ्ते में पूरा निपट जाएगा। मतलब एसक्यूएल, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेवलप्ड मतलब बहुत एडवांस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एसक्यूएल और पाइथन ये दो देख लेना। और फॉर नाउ लाइक अभी का जो स्टैंडर्ड है ना जॉब मार्केट में, जो स्टैंडर्ड सेट है उसमें सी पता होना सब, मतलब सी प्लस प्लस सबको पता होना चाहिए, तो वो तो है ही। बाकी एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए कोई एम कर रहा है या फिर कोई भी बिजनेस प्रोफाइल के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो कोई भी मैनेजरियल प्रोफाइल हो, एसक्यूएल और पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग सीवी में ना मांगते हैं। तुम जब जॉब स्टार्ट भी करोगे
तब तुमको ना ये चीजें एज अ होमवर्क भी बताया जाएगा कि ये चीजें प्रिपेयर करके आना। तो दैट्स अ थिंग कि एसक्यूएल कोई अगर कर रहा है, और कोर नॉन कोर सबके लिए आई थिंक एक्सेल और पावर पॉइंट, ये दो सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक्चुअली बहुत अच्छे से। बाकी एसक्यूएल और पाइथन एज आई सेड बहुत ज्यादा मतलब एडवांस नहीं, बट पता होना चाहिए। And I just want to clear one thing. Like for internship, you just need to have knowledge of OS and OOPS. And for placement, you need to have knowledge of all the 4 subjects: OS, OOPS, DBMS, and CM. So if you are looking for only, if you are in second year, then just prepare OS and OOPS. Right? Thank you so much, seniors. So with this, we have come to an end of this placement talk. Thank you so much, seniors, for joining the meet. Once again, we take a moment to extend our sincere congratulations to each of our esteemed speakers for their outstanding achievements in securing positions within renowned organizations. Their accomplishments stand as a shining example of their tireless efforts, unwavering dedication, and unwavering commitment to achieving greatness. Thank you so much, seniors, for giving your precious time to this placement talk. I hope we all have got really information about what we wanted to discuss about on internship and placements. Thank you so much. I would like everyone to wait for a moment. We have Nigna ma'am with us from Exxon. So anyone who's interested in core placement and in Exxon can wait. Ma'am, I would like you. Thanks, Ashutosh. I'll keep it very brief because अभी तो शायद non-core के ही लोग बचे हुए हैं. But in case if anyone wants to know, you can hit me up. But otherwise, is this mostly second years or are there third years in there as well? And third years as well. Okay. So, like, for your internships, which I guess might start from, the internship drive might start from October. So, for that, basically, this duration that you're getting the second years specifically, you should focus very well on getting your technical basics right, and like read as much of the basic material that you're being provided right now. लाइक जो भी अभी क्लास मटेरियल मिल रहा है, बी एट अगर रिजर्वर का टी कुमार सर ले रहा है, सो गो थ्रू द बेसिक थिंग्स फॉर दैट. वो सारे पी डी एफ लाइक ही हैज़ नंबर्ड देम आई गेस फॉर यू गाइज एज वेल, 1A 1B 2A 2B करके सारे टॉपिक्स डिवाइडेड है. गो थ्रू ऑल ऑफ देम, दैट विल बी लाइक योर होली ग्रेल फॉर मास्टरिंग दिस सब्जेक्ट अगर रिजर्वर का तुमको ढंग से देखना है. एज फॉर द अदर, आई वुड से प्रोडक्शन का भी लाइक गो थ्रू द बेसिक्स वेरी वेल. At least in दोनों subjects में, for reservoir and production, these two materials that your professor is providing is kind of enough. And apart from that, like you have your books, there's Harriet Watt, then बाकी जो भी books अभी like course structure में तुम लोग को बताया गया है, go through that. But at least for clearing the basics, सारे PDF अच्छे से पढ़ना. And apart from that, you should also focus on making your group discussion skills, like your soft skills, your presentation skills pretty well. Kyunki udhar Exxon has this method that they would first put you all through this group discussion, and usme se shortlist honge, then you will go on to the technical interview round. So उसके बाद टेक्निकल में तो यू कैन कवर इट, आई एम प्रीटी श्योर वंस यू हैव गॉट योर बेसिक्स राइट, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. अगर ग्रुप डिस्कशंस या फिर पर्सनल इंटरव्यू वाले कोई भी वर्कशॉप एसपी या फिपी कंडक्ट करवा रहे हैं, प्लीज़ डू जॉइन देम. बहुत अच्छे स्पीकर्स आते हैं, दे विल गाइड यू एज टू व्हाट यू शुड स्पीक अबाउट, करेक्ट कौन से चीज़ों पे फोकस करने चाहिए. गो थ्रू ऑल दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स द बेसिक्स. अभी तक सारे सीनियर्स जैसे भी बताया, फील फ्री टू हिट एनी वन ऑफ अस अप. कोई भी अपना टाइम लेकर समझा देगा. ओके, दैट वुड रैप इट अप. हाय त्रिशा. Thank you so much, ma'am, firstly for joining us today. And thank you so much for providing such a detailed explanation. Thank you so much, ma'am. Now over to you, Ashutosh, if you want to add on anything. Thank you so much, ma'am, for
for explaining this to us, for taking out your time. And now we would like to wrap this placement talk. Hey, Thank you very much. actually, I want to add one thing for non-core people. मेरे को लगा था कवर अप हो जाएगा किसी क्वेश्चन पे. See, for particularly for interviews, I will tell. There are two types of round. One is DSA round, and second is project discussion round. Okay, so for DSA round, whenever you are asked a question, so you should first of all give a brute force approach, then go for an optimal approach, right? So like if you get the solution in under 1 minute because you have already know the question, so you can tell it. But if you don't get the solution under 1 minute, first of all give the brute force approach and then try to improve. And अगर नहीं बनता question, so it's not that you will get rejected. They try to see the approach you are following. So if तुम्हारी approach उनको अच्छी लगी, even if you are not able to solve question, you may get past that round. Okay, and second is project discussion round. So for internship तो project ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, छोटा सा ही होता है. But ये round में ना you have the opportunity to direct the round where you want it. So whenever you are describing the project, highlight the parts which you are confident about. कि जो भी तुम लोग बोलोगे उसी से वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे next. If you talk about any tech stack, they will ask the question from that tech stack. So you should be well prepared with the project. Like you should know in and out of your project. At least one project is required, right? These are the basic two rounds. And about CS fundamental, you are asked a very general question in CS fundamental. So जो भी तुम लोग ये वीडियोस वगैरह से पढ़ोगे मोस्टली बन जाएगा. So उसका तो टेंशन लेना ही नहीं. बाकी there are a lot of things, so I will just say if किसी को doubt हो, so they can always DM me or any of the seniors. Thank you so much, sir.